A very good evening to each and everyone present here. Myself Divya, today's duty coordinator. Today our topic for group discussion is free Wi-Fi hotspot beneficial or not. Before going into a very deep into this topic, I request Ganesh to please introduce this topic. Ganesh, please continue. Thank you, Divya. Good evening to all. My name is Ganesh Verma. Today, I am here for the discussion of the topic free Wi-Fi hotspot beneficial or not. Free Wi-Fi would mean good saving for the common people and even those who need an internet connection but can't afford it would beneficial greatly from them. But free Wi-Fi is not always advantage. They have some disadvantage. Now public Wi-Fi is almost everywhere and you can access the internet almost everywhere, which is free of cost. But anything that come for free also has a some hefty price of it. In the case of public Wi-Fi, it can be posing threats to you and your mobile devices, hacker abuse, etc. So let take a deep dive into our group discussion. Now I told to all participants to participate in group discussion. Thank you. Thank you, Ganesh. Now one by one, all participants please present their views regarding the topics. Dhruv, you please start. Thank you, Divya. Hi, this is Dhruv from ECE second year, and I'll be presenting my views on the topic. Considering free Wi-Fi's as an boon, because it is available to those people who are in need of Wi-Fi when they are not able to afford it, and even if they are not able to uh, even if there's a network connectivity issues regarding that, so people can easily access that in case of emergencies. And free Wi-Fi could be helpful for students too, who are in need, because internet is a huge resource. Internet might help you to regain your knowledge, but internet has some issues, which we all know that internet, if it's in the wrong hands, might lead to some uh, what do you say? Yeah. So it might lead to some problems to other people. So you might see this as a boon and a curse side by side. Uh, Talking about the curses of free hotspots, that it is not reliable. It has annoying announcements, advertisements, because you know that nothing is free. Everything comes at a cost. So basically, servers might try to bombard your devices with advertisements, or might take loads of your data from your phone without you even noticing them. So anyone wants to add further I completely to this? agree with your point, too. I would like to say that free Wi-Fi is a good thing, but providing free Wi-Fi has more disadvantages than advantages, as it is not much advantageous in long run. Because when we will install free Wi-Fi around, each part of the city, then the main thing which will happen is reduction of speed. Because when we will install free Wi-Fi, then the Wi-Fi installed for the public, they are actually long-range Wi-Fi networks. So that is why they will reach to the range of many people together, and everyone will use it because it is already free. So everyone will use it, and eventually every Wi-Fi network has its particular bandwidth. And suppose 720 Mbps is the bandwidth. Then if 72 people are using it, then the speed will reduce to 10 Mbps, and that will become a very less speed if we talk about Wi-Fi network.
So that will be a disadvantage that when so many people are using, then the speed will reduce substantially. And also when free Wi-Fi will be installed everywhere, there are few steps we need to perform to get the free Wi-Fi, like sign in and all using our personal details like mobile number and all. And it is a both-sided traffic. Like if we are giving our phone number or email ID to a unknown Wi-Fi operator, then we are also not safe. And on the other side, the institution or the organization which is providing the free Wi-Fi, it is also not safe because they are giving their network to a person, and if that person, because nowadays cyber security is a very trending topic. People are learning ethical or non-ethical hacking a lot, and they are learning it and they are applying it to many places. So if they know hacking, then they can hack the systems of huge organizations and use it for their own benefit. So that's my view for this topic. Tanisha, you continue. Hello, good evening, everyone. Myself, Tanisha. I am a student of second year from Electronics and Communication Department. I think free Wi-Fi hotspot is beneficial. Free Wi-Fi hotspot. Free Wi-Fi hotspot helps in Digital India scheme. These hotspots can encourage the usage of internet. This will help students and unemployed people to use who are in the need of internet to access but who can't afford. Free Wi-Fi at railway station helps in booking cabs and rooms. Free Wi-Fi can act as a tool for the unemployed and social inclusion, as not everyone can afford to buy a computer or a smartphone with a data plan. I think free Wi-Fi provides social inclusive and encourages internet access. Hence, this is beneficial but expensive. However, the investment will give return in terms of increased digital literacy and internet coverage. Thank you. Okay, Tanisha. Ashi, would you like to add something? Yes. I'm Archie. I'm from second year ECE. Free Wi-Fi is like a means of free internet. There are many advantages and disadvantages of free Wi-Fi. Free Wi-Fi has a wireless network, allows multiple users to connect through the same network. Also, it have mobility. मतलब you can regular works from anywhere from you want. um, or there are many also disadvantage over advantage. Due to its wireless nature, it has high chances of being hacked, like public Wi-Fi networks. Free Wi-Fi has opened up. Wi-Fi network is limited, typically around 100 to 150 feet. Its free Wi-Fi speed connection are far more slower than wired connections. Mm, Also, free Wi-Fi allows 30 maximum devices to connect, and its bandwidth is weaker if you add more devices. Also, it's due to which there are many health issues from this. Thank you. Okay, Ashi. Ganesh, Bhangam, Dhruv, would you like to add something? Yes, everyone say that free Wi-Fi hotspot is beneficial. Mostly, they have some advantage and disadvantage also. But in my view, they have some advantage, but disadvantage is more because as like everyone use the free Wi-Fi because they have free data. We can download access and speedily something and more. But there have a mainly reason. First of reason has come is session hijack, packet sniffing. When someone use free Wi-Fi, there have a free Wi-Fi have no SSLR certificates.
बिकॉज अगर मैं इसको डीपली में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो अपन फ्री वाईफाई यूज कर रहे हैं उसको, तो जो सेशन हाईजैक होती है, पैकेट स्निफिंग होती है, वो फ्री वाईफाई से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बिकॉज पब्लिक ट्रैफिक वहाँ पर ज्यादा होता है, मोस्टली पीपल इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो बट उनका जो भी कोई बैंकिंग की साइट होगी, कोई भी पैकेट हो गया, उनके डाटा होगी, वो पैकेट में स्निफ हो जाती है। पैकेट स्निफिंग विदाउट एसएसएल सर्टिफिकेट, अगर वो साइट एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, राउटर नहीं है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मोस्टली जगह पे जो मैंने देखा है कि फ्री वाईफाई विदाउट एसएसएल सर्टिफिकेट रहते हैं। तो वहाँ पर MITM जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, मैन इन द मिडल अटैक जो सबसे ज्यादा होता है, जो जहाँ पर जितने भी वाईफाई कनेक्ट है, उनका डाटा एक बार में स्निफ हो जाता है। तो अगर आप फ्री वाईफाई यूज कर रहे हो, और मोस्टली भी पर अगर उसको हैबिट बना लेता है, तो उसका पर्सनल डाटा, उसका जो साइट है वो यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसके ID पासवर्ड्स हाईजैक होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे व्यू से ये है कि अगर आपको पब्लिक वाईफाई या फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट यूज करना, तो आप नॉर्मली आप आपका यूज कीजिए, जस्ट लाइक डाउनलोडिंग, या जो आपके लिए नीड के लिए है। आप पूरी उस पर डिपेंड ना हो, बिकॉज आप कंप्लीटली अगर एक्सेस उसको दे दोगे, तो आपका डाटा स्निफ होने में या फिर हाईजैक होने में कोई प्रॉब्लम होगा ही होगा, आपका डाटा स्निफ। तो मेरे लिए ये है कि अगर आप पर्सनल डाटा अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेसिक आपकी जो नीड है आप वो कंप्लीट कीजिए, ज्यादा मत ये उसको कि आपकी बैंकिंग हो गया, फिर वो कोई प्राइवेसी है जो कि अपने इंडिया के अंदर मेन रीजन चला हुआ है। इस रीजन की वजह से जो बाकी चाइनीज ऐप है, या और भी कितनी बैक टू बैक हर मंथ हमने को न्यूज में रही है कि आज 100+ है वो ऐप बैन की गई है, जो कि डाटा पॉलिसीज की वजह से, जो कि अपना इंटरनेट एक्सेस की वजह से अपना डाटा को आउट कर रहे हैं इंडिया के आउट। अब वही वहाँ पर अपन अपने इंडिया लोकल बेस पे चेक करेंगे, अगर कोई फ्री वाईफाई यूज कर रहा है, उसको इजीली अपन DDNS से चेंज कर सकते हैं, वो अपना डाटा स्निफ कर लेता है, तो उससे फिर अपनी प्राइवेसी को खतरा है। तो मेरी ओर से ये है कि फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट बेनिफिट नहीं है। थैंक यू। Adding on to what Ganesh said, I think that what government needs to do, it needs to protect the citizens, their data from getting sniffed while they're using the free Wi-Fi's, uh, because it might be a certain case when you don't have a mobile data access at that particular moment, but you need to transfer some money. You have just a simple resource that is your free Wi-Fi, if it's available at that point. So I think government should take some steps for protecting its citizens' data while providing free Wi-Fi for more digital literacy. So yeah, Shubhangam, you want to add something on that? Yes, I also agree with both of you. Free Wi-Fi, actually, there are still many public spaces where free Wi-Fi is being provided, like railway station or airports. But the thing is that there are many multinational companies which are trying their best to bring a type of internet revolution to India, where they can provide internet cheaply to every people. For that, they have done a lot of things, lot of investments. Reliance Jio company, which has a huge impact on our country's GDP, and also it is a huge country and huge company in our country. So the revolution started from there. They bought bandwidth, they bought optical fiber rights from the government, and did that to make the internet available to the people cheaper. So now, if we install free Wi-Fi everywhere, like according to the topic of this discussion, is that in each and every part of the country, then people do not prefer will not prefer to buy their own personal internet, like internet hotspot or mobile data. They will reduce the use of personal data, and that can seriously affect those companies which have done so much investment and so much of revolutionary things for our country. So I think loss for those companies which are of Indian origin is an indirect loss to our country. So that's my opinion about free Wi-Fi. Thank you. मैं ध्रुव ने जो ऑप्शन उठाया है कि उसका रिप्लाई करना चाहूंगा, कि ध्रुव ने कहा कि गवर्नमेंट फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट सिक्योर करवाए। ठीक है, तो मैं उसमें जवाब में आंसर बताना चाहूंगा कि जैसे कि ध्रुव ने कहा सिक्योर के लिए,
बट आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा दिए, मतलब फ्रीली यूज एक्सेस करने के लिए, कि अगर आपको इमरजेंसी में कुछ यूज करना आप कर सकते हो। आप ये देखिए उसको फ्री वाईफाई को आपको लगवा दिया, बट उसको सिक्योर बनाना एक जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो इस लेवल तक बढ़ जाएगी कि पर्सनल लेवल पे वो गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिचार्ज प्रोवाइड करवा सकती है। तो अगर फ्री वाईफाई का फिर अगर वो इतना कॉस्टली हो गया तो फिर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट का कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबल इजीली पब्लिक में डिवाइड कर पा रही है तो फिर वो उसको सपोर्ट ज्यादा करेगी। अगर वो सिक्योर सर्टिफिकेट, एसएलआर सर्टिफिकेट हर साइट को प्रोवाइड करवाएगी तो आप लोग एक एसएसएलआर सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ जाती है। तो उसके लिए तो अगर वो पर्टिकुलर अगर साइट के ऊपर पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड करने लग जाएगी तो वो तो एक बेनिफिट, वो एक पर्सनल बंदा रिचार्ज करवा लेगा, उससे भी ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इन द मैं फैक्ट कहना चाहूंगा जो बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बट आज के टाइम में देखा जाए इंडिया के अंदर जो डाटा प्लान है ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा चीप है। आप देखोगे कई सिम ये भी प्रोवाइड करती है कि आप अगर आपको डाउनलोडिंग हाई स्पीड चाहिए या डाउनलोडिंग की नीड है तो कई सिम के अंदर जो 12 से 6 AM तक आपको अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करती है। अगर आपको कोई नीड है, इमरजेंसी है, या फिर आप होल्ड कर सकते हो तो आप उसको प्रेफर करो, ना कि फ्री वाईफाई को। फ्री वाईफाई एट ऐसे है कि आप जिस सिचुएशन पे नहीं यूज कर पा रहे, आपको इमरजेंसी है, कोई आपको नीड है, तो वो उस यूज के लिए है, ना कि आप पर्सनल हैबिट बन जाए कि हर पर्सन जाके फ्री वाईफाई यूज करे बैठे। तो इसलिए रिगार्डिंग मेरा ये पॉइंट है। Thank So this requires hand from both sides, the government and the user also. दोनों अपना डाटा सिक्योर करने की कोशिश करें। वो अपनी तरफ से स्टेप्स थे और यूजर भी अपनी तरफ से खुद को प्राइवेसी प्रोटेक्शन बनाए रखे। तो ये मैं कहना चाहता था इसके ऊपर। प्राइवेसी पॉलिसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा ध्रुव की बात पर, कि प्राइवेसी पॉलिसी का ये है कि फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट अपने लिए अवेलेबल है, जो अपने लिए बेनिफिशियल भी है। बट हम उसको अगर अपने बेनिफिट के लिए, कंप्लीटली बेनिफिट के लिए यूज करेंगे तो वो अपने को कहीं ना कहीं अपने के लिए जो कॉस्ट अपने को उसको देनी पड़ेगी। चाहिए अपन स्मॉल टर्म में ना पता चले, वो लॉन्ग टर्म में आगे जाके जस्ट लाइक अपन जो भी साइट यूज करते हैं वो डायरेक्ट साइट का डाटा अपना आउट नहीं होता, वो पैकेट्स के अंदर जाके अपना शिफ्ट होता है। तो उसमें आपने जो साइट यूज की है, जैसे आप अपन देखते हैं कि रेगुलरली की एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई भी अपन साइट चेक की है तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाती है, तो वो पैकेट शिफ्ट होना इजीली है। तो अपन जब नीड हो या फिर कोई इमरजेंसी कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो उस चीज के अंदर अपन फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। तो उससे अपना डाटा भी सिक्योर रहेगा, अपने उसका बेनिफिट भी रहेगा, ना ज्यादा उसको करने की नीड रहेगी। थैंक यू। Okay, thank you very much, both. Thank you, everyone. So now I would like to conclude this topic, saying that on the note that if government or any organization provides free Wi-Fi to the people, then we will overuse it, and eventually it will kill the purpose for which it was made. Like the speed will reduce. Sometimes there will be technical issues and all. And if we don't provide free Wi-Fi anywhere, then no one will get free Wi-Fi, or no one will get a little bit access to free internet anywhere. So I think to make a conclusion, what the government or any other organization should do is that take a very minimal payment and give Wi-Fi. Give Wi-Fi to public places which actually stay crowded, and the payment they are receiving from the people, as it is a very crowded place. So if each people gives a little bit amount of money, then they can raise a lot fund, and they can use it for increasing their bandwidth and make the connection better. Like I have seen in many hospitals that there are two options for the patients to access Wi-Fi. Like one is free one. Okay, that does not give speed. Everyone knows that. So, but another one is there which takes only 10 rupees for 1 day, unlimited data. So I think that system is very good. People can afford 10 rupees, like maximum of them can afford 10 rupees. And on the return, they can get a good speed internet, which we actually need. Like we don't need internet, like any internet. In the time of 4G, we need a good speed internet, and I think that should be the point. So thank you. That's my conclusion. Thank you.
Ganesh or Dhruv, would you like to add something in conclusion? So, Shubhangam, you said that this should be free, but at a cost. What were you trying to say? Yes, a very less It cost. should A very less cost, very like minimal cost. cost, affordable. Yeah, Yeah, yeah. that is a good suggestion. Yeah. Ganesh, would you like to add something? Ganesh, Tanisha? Yeah, I am agree with Sombagam because our privacy is the first issue because जैसे कि अपन रखते हैं कि प्राइवेसी को अगर अपन फर्स्ट पेज पे नहीं रखते हैं तो वो किसी के लिए फ्री वाईफाई यूज कर सकता है। बट आज के टाइम में कुछ पीपल है जिनको लगता है कि प्राइवेसी कोई वो नीडेड नहीं है कि भाई हम तो फ्री वाईफाई यूज करेंगे या फिर समथिंग है, बट उनको ये नहीं पता उनका डाटा जब वो कोई बड़ा जब तक उनका इंसिडेंट नहीं हो जाता जब तक उनको इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं प्रेफरेंस में ये कहना चाहूंगा कि जब आपको नीड हो जस्ट लाइक कि कोई फाइल ट्रांसफर या डाउनलोडिंग या इसके अलावा आपको कोई भी एक्सेस करनी है इमरजेंसी के अंदर जस्ट लाइक आप प्राइवेट वेबसाइट उसको एक्सेस कीजिए मत उसको जो जिसमें आपको प्राइवेट इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक आईडी या एनीवन नॉट बैंकिंग बट कोई भी आज के टाइम में आईडी पासवर्ड हर साइट के ऊपर रिक्वायर्ड हो गई है तो वो चीज आप एक्सेस ना करें, बल्कि जो आपके लिए कम यूज के लिए है जो आपको लगे कि हाँ भाई हाईजैक या जो भी पैकेट शिफ्ट हो जाए तो इतना ज्यादा इशू नहीं होगा तो आप वो एक्सेस कीजिए या इमरजेंसी में यूज कीजिए। वरना डाटा के लिए स्मोकन ने बता ही दिया कि 10 रुपए मिनिमम कॉस्ट जो कि सबको अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्री वाईफाई के लिए हम इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं जो बेनिफिट है, बट रेगुलर यूजेस के लिए वो डिसएडवांटेज बन के हो जाएगी नोट, इसलिए थैंक यू। Thank you everyone for giving your precious time. Thank you. Have a great day. थैंक यू।